तो है ना? नहीं, ये तो इसमें होगा। So good evening, guys. Why? No, you have signed. No, for my lecture. अच्छा, you have signed. Oh, sorry. Why is in a merry-go-round sitting? इधर आ जाना ये bench में. Oh, he doesn't want to be near to the teacher, huh? Where I'm going to bite and wobble you. What's your name, man? Parth. And? Vatsal. And Parth is from which school? Vashi. Sorry. Vashi. Goldcrest and? Anchor wala. ये है किधर है ये? खबर क्या है? फिर किधर? ये क्या नाम है एंकर वाला? Anchor wala education academy. बहुत सुना एंकर वाला मुझे लगा कोई ये कमोडिटी का नाम लग रहा है एंकर. ठीक, let's start with our studies. So my name is Alagesh. You've got the timetable. When you get the timetable, this is my initial. This is how it looks like. So you have to bring history, correct? And my full name is this. This is how I spell my name. Alagesh किधर है? अलग है ना? Alagesh. ठीक है? So I'll be starting with the Harappan civilization, correct? Yes, sir. So you can pick up your volume, textbook, as well as your notebook. Harappan civilization. Good. Here's got the volume. तुझे नहीं मिला? Yeah. Volume. Crash buttons. Oh, today please. Today will you join? Yes, sir. First set. Good. You have attended other lectures, math, science, and SSTs first today. Good. So where's your notebook? You maintain a separate notebook for me. I put the heading in your notebook. I'm going to discuss. No, that's okay, no problem. But you have to keep it for history alone. Do? Yes, sir. So you can put the heading. What is the heading? Civilization. Harappan civilization. Let us Can I understand make a that. two-part history? है क्या उतना पेजेस? 2 पार्ट के. ऑलरेडी वो बुक आधा यूज कर लिया है. No. Hey man, that is a rough notebook. आज ले, but maintain a separate notebook. Yes, sir. I could see everywhere you are writing. Yes, sir. I have. Thank you. What a interesting boy, huh? Good. I. So write the heading Harappan civilization. Now before I start with the chapter, let me tell you my method of teaching. What are you guys are new and I am also new to you. I will be explaining. I will be asking you to speak to me related to the topic. I will be throwing you world of knowledge regarding the news channels. You guys might not be watching. Pakka? Kyo? Sir, it causes a headache. Oh, it causes an headache. Might be Republic channel. How about you? News channel देखते कि नहीं? Not interested. मैं किस में इंटरेस्ट? फैशन Sports. स्पोर्ट्स में? पक्का? IPL अच्छा ठीक है वो तो मैं भी देखता हूँ. But I always feel ना मेरा एक ही फेवरेट चैनल है. सारा न्यूज चैनल इंडिया का अपलोड का सारा वही देखता हूँ. IPL पहले लाइव देखने जाता था DY में, but अभी वो भी नहीं जाता. These days. ठीक है, good. But then what else you have fun and entertainment? Physical activities. Which activities? Physical activities. Sports. Oh, you play. Good. Which sports? I played football. Before Corona, I tried swimming, but I You go. नहीं? yeah. खेलता है? क्या करता है क्रिकेट में? सबसे बॉलर है. बॉलर है? Oh my God. समझ गया. Medium fast spinner. Right arm, left arm. Like that. ये बोलेगा ज़्यादा पिन छोड़ के क्रिकेट में घुस गया. Nah, even I used to play cricket for my college when I was studying. Okay, let's bring back to the chapter. Now, when I use the word Harappan civilization, the first word strikes my mind is this. Correct? आपका mind में strike हुआ कि नहीं? The chapter है अभी क्या strike है ना? So, any idea what is that meaning? Civilization? It is a place where human settlement is there. अच्छा, place where human. Good. And you boy, तेरा नाम तो नहीं पूछा ना? You are Parth. Sorry, you are Parth and you are Vatsal. ये मेरा
नाम बोलने का आदत है, so don't mind it. IAS was your HDR है क्या? Oh, good. So what do you understand by the word civilization? Why only group of people? क्यों one people cannot go and live? Group ही जाएगा? Yes, sir. अच्छा ठीक. I'll say very simple. It is, we can say, art of growing crops. Correct? In fact, what we are talking about? Agriculture. Correct, Anna? Art of growing crops. Then what else? Sir, town planning. You understand town planning? Then what else? Sir, one thing of Harappan we will never forget. It is called a citadel. C. Okay, सीता का किधर इधर अंदर लेकर आ citadel है ना? I'll tell you. Then we have great baths. ये सब मिला है historic site में मिला है ना हरप्पा में great bath. हाँ. Then we can say granaries, food granaries. Did they do it? Yes. Then they have this underground. I'm saying underground, huh? Yes. Underground sewage pipes. Oh my God, उस time पर. So dancing dolls. Dancing doll. Then we say it was around 3,000 to 4,000 years before. Am I correct? Yes, sir. So when the entire world was unable to understand what is living, Asians, Indians are shown to the world. Some people say, sir, Egyptian सबसे पुराना है. Iranian, that is Mesopotamian. Some people say Nile, the gift of Egypt. Correct. But then we challenge, no. Harappans are the world's oldest. If you say Harappa, today it is found not only in one country, our beautiful friend called Pakistan is also there. Correct, Anna? India and Pakistan में majority sites है. Harappa is there with India, some Punjab, some parts of Punjab. Then we have Lothal, Kalibangan, and there are many. Lothal और Kalibangan Pakistan में, India में नहीं. In fact, my history teacher has gone to these sites in Pakistan. Not now, maybe 15-20 years before. She told us. Yeah, I'm not a history teacher. My history teacher. Your history. Yes. Why? You're a name. Means you are a sister. When I was in my school life. No. I was in my college life. I'm from this background, arts background. I've done entire economics, and my favorite subject is economics, will be economics and always. But I teach SST fully. What is he searching for? Achha. So when I use the word civilization, I say art of living. You'll understand? Art of living, समझता है? क्या है? मुझे तो नहीं समझता. क्या sir? Art of living. ART. Art नहीं, हिंदी वाला art नहीं. They have mastered how to live. Very good. They mastered how to live. Today I say they had houses of 2-storied. You know 2-storied? Yes, sir. Sir, I live in the 14th floor, sir. कौन सा 2-storied का बात कर? Like now you are in the 21st century. But imagine 3,000 years from today, 4,000 years from today, when the world was living in the caves, you know, caves, somewhere on the tree branch. Some don't know what to wear and what to eat also. But Harappans are shown. Why this Harappan has developed such a artistic one? In fact, there was a country called Mongolia. Correct? We are from there only. When they came to India, that time it was not India, Bharat they used to call, big country. There was a river. Which river it was? Indus. River Indus. Correct? And there are tributaries of river Indus. You understand tributaries? Can anybody name? Partition. Tributaries के नाम partition. Yes, sir. समझ गया. समझ गया तो छोड़ दो. One is Ravi, Bias, Satluj, and Chenab. So today we have a state called Panjduab. 5 rivers, including 1, 2, 3, 4, and 5. The name of the state is Punjab. You understand Punjab? No doubt India का richest farmers इधर से या?
इंडिया में कोई रिसर्च फार्मर भी है? हाँ क्यों नहीं है, बस ये तो पॉलिटिक्स में दिखाते हैं गरीब गरीब, कुछ गरीब नहीं है। हरियाणा और हरियाणा एंड पंजाब इज कंसिडर्ड टू बी द richest farmers in India. If I tell you, you laugh, but that is the truth. In certain Punjab farmers, they mix the lassi not in pots or anything, in washing machine. Sir, washing machine सरदार है सर, हाँ उसी तो कर रहा है। तो मैं जब सरदार के घर में रुका हुआ था, वो तुसी लस्सी, और हाँ सर लस्सी, अरे वॉशिंग मशीन, जा भाई तू उधर रखा है, लो वॉशिंग मशीन में पागल है कुछ, इतना बड़ा 9 kg का इसमें लस्सी घुमाता है, सोचो रिचनेस, हमको इधर 2 बकेट मिलने से दूर होगा। And as we say, majority female are having color TV. Sir, हमारे घर में भी Mercedes, and majority of the families are in London, in Toronto, where I have stayed for long number of years. आधे से ज़्यादा पंजाबी टोरंटो में ही है। What does it mean? The rich farming money, they are sending their children to all abroad countries. Okay, let us bring you back to that Indus Valley civilization. So because of this river Indus and its influence, we can name Harappan into which civilization? Indus Valley. What is Indus? Because the influence of which river? Indus. So when these people came to India from Mongolia, they were who? Animal raiders or farmers? Farmers. They were animal raiders. So वहाँ से तो भेड़ बकरी के लिए इंडिया में है ना? And when they came to India, they saw which river? River Indus. Plenty of water, correct? पाकिस्तान में से। हाँ, भी पाकिस्तान में है। And then fertile soil. Which soil? Alluvial soil. They started what? They started agriculture or farming. So in history you might have done. One is food gatherer. So they were food gatherers here, The farmers. and now they are food makers नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं? Food producer. मैं डॉक्टर को बोलने वाला था। It's okay, it's okay. तू बहुत बड़बड़ करते हो, तू कर। And what the way of sitting? She's like a student. That's या तो तू फिर दोनों साइड में पैर डाल के बैठ सकता है, नहीं ना? पैसा। ऐसा नहीं, उधर एक पैर इधर एक पैर डालेगा, तो फिर ऐसे ही करते, punishment. So we always believe this Harappan civilization is a mark of development of Asians. In fact, I can tell you more than this also. Before Wright brothers invented, Wright brothers ने क्या invent किया? Asians know how to fly. Any idea? मैं क्या बोल रहा हूँ? Ravana kidnapped Sita. हाँ sir, क्या हो गया? Ravana kidnapped Sita in a I think what is that? Pavan Hans. He used to have a small, which will fly at a distance. Then before the Americans or Europeans could develop 9 planets, you go to any temple today, तो शनि भगवान बोलते देखा, 9 planets उधर है, नवग्रह को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं. And every planet उसका color के accordingly cloth रहता है, देखा? Jupiter will have a yellow color cloth. Sun will have a red. Saturn will have a sunny black color. So हमारा एस्ट्रोनॉमी बहुत पहले डेवलप हो गया। आर्यभट्टा 0 and 1, करेक्ट? पूरा वर्ल्ड तो मालूम है। But before Aryabhatta has shown zeros and 1, there is a language even today they call it as Tamil literature. Tamil. They had 1 to 100 before Aryabhatta had developed 0 and 1, which you and me cannot read. So no doubt we challenge today all the Europeans. ओए तुम्हारा कल्चर से हमारा कल्चर 100 गुना बेटर। तो ये लोग पीछे है। हाँ। तो ये लोग पीछे है। क्यों पीछे? Because of the politicians. पर ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। होप कि ऐसे ही रहेगा। Correct. देखो तुम्हारे को। So at least now India is in such a powerful position. America also want India to talk. Ukraine also want India to talk. To whom? To the Russian president. अभी उनको लगता है कि मिस्टर मोदी कैन स्टॉप दिस वॉर। अब हम लोग ये स्टेटमेंट को पाकिस्तान के लिए बोले, पाकिस्तान को तो बोलेगा तेरा मुंह बंद करके निकल यहाँ से, तुझे कुछ बोलना नहीं था। I think Mr. Imran Khan went to Russia, is it? Exactly on the day of the war start. हाँ, जेल में डाल दिया उसको। नहीं मुझे नहीं लगता, but he will be I don't know जिंदा है क्या जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर भगवान को ही मालूम।
बिकॉज पाकिस्तान उतना अच्छा करती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को उठाएगा या तो फांसी में लटकाएगा या तो फिर पाकिस्तान से भगा देगा। Even yesterday also there was a debate in Arnav channel as you were saying sir headache है, they were saying कि हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसके घर में एंड कर्नल बाजवा है ना उनका जो मेन आर्मी का लीडर है, उसका आर्मी लोगों ने इमरान खान को झापड़ उपड़ मार के लेके गए। We don't know what is the truth, हाँ ये पाकिस्तान में चलता है, इसमें क्या नई बात है। Because last 1 week he was not giving that motion ना, और no confidence motion में वोट नहीं डाल रहा। That is all. Let us come back to history. So our Indian history is very rich. Which civilization? Harappan civilization or Indus Valley. So can we write the word civilization in your notebook? So please write down civilization. It simply means. Hey, give me a volume. You didn't get the volume? Feel तो लेना भाई। कार्ड पे बाबा तुझे पूछ के लेने का, थोड़ी देर going to give it to you। मैं बोल देता हूँ, विजय है उसे ले, हाँ? It simply means the art of living advanced stage, in an advanced stage, art of living in a advanced, you understand, or you want me to write that word? advanced Good, इतना तो आता ही है तुझे। Advanced, NCD। मैं पहले बोलते हुए बोला कोई दूसरे वर्ड बोलते नहीं, I am saying this word only। advance इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन दूंगा ना पकड़ कर, तो बॉलर से सीधा फिर तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनता है। Advanced stage of life with surplus food. Why are you writing in the last page of the book? तेरा माइंड ही रफ है, यही रफ है, और मतलब बाहर भी जाके रफ बुक में पहला वर्ड क्या है? You are making fun of my pronunciation, na? So careful next time. it one No, I understand. I am careful with my English and my language, more better than you. सब लैंग्वेज का उधर ठीक है, लिखा surplus food लिखा? लिख दो surplus food. Then evolution of cities, evolution of new cities. Can I write the word evolution? Evolution of new cities. This is the word. Evolution of new cities. so there are only 2 cities There are but many sites जो हम लोग ने डेवलप किए हैं, correct? लोथाल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो। I think मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ाई किया ना, there were 15 sites, 15. But आपका बुक में बहुत कम दिया है, हाँ 8 है ना। There were 15 sites जो अलग-अलग जगह पर था, correct? Right up. Then surplus food लिखा, evolution of new cities लिखा, public buildings, public and government buildings लिखो, public and government buildings. He asked me what is citadel, अभी ये लिख लो, citadel is government building, public and government building, bracket you write citadel. चला थोड़ा हाई प्लेस पे था हाँ मतलब सेंटर में था टाउन का और वो हाइट में था। गुड तुझे आता है? मुझे आता है क्या, पढ़ा है तो मुझे भी मालूम, तुझे आता है क्या? अभी सारा क्वेश्चन का आंसर खुल गया। नहीं सर हाँ ऐसे कैसे? सिटाडल सर वो क्या पता उसको भी पूछूंगा मैं, क्या तेरे से ये है क्या? Then you are my same student like him. Art of writing. Next, art of writing and use of new technology. Art of writing and use of new technology. Art of writing and use of new technology. Now read this one by one and tell me
what it is? Where you want me to explain one by one? Yes, ma'am. What happened? Textbook, sir. क्या हो गया? फिर meaning of the लिखा हो. हाँ. क्या पढ़ना है textbook के फिर Oh my dear boy, the words that I've made you to write one below the other, है ना? That you have written. I will discuss one by one. What do you want? What do you want? I read the first word. You only. First surplus between Surplus food. उसके पहले क्या लिखा है? Surplus food के पहले क्या लिखा है? It simple means. It simply means. It's simple नहीं. Simply means art of living. Wait. What is art of living according to you? Now you are also living in city. I am also living in city. तो मेरा और आपका लाइफस्टाइल मुझे बोलना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. But if we compare our lifestyle with the person who is living in Africa, छोड़ो सर, इधर हमारा सिटी छोड़ के बाहर जाएगा तो महाराष्ट्र का लाइफस्टाइल हमसे मिलता नहीं है ना? क्यों सर? उनका टाउन अलग है, हमारा टाउन अलग है. हम लोग इधर स्काई क्रैपर्स में रहता है, फास्ट लिफ्ट है. उनके पास स्काई क्रैपर तो झोपड़ी भी नहीं है ना? तो उनका स्टाइल ऑफ लिविंग डिफरेंट है. अर्ली मॉर्निंग आप उठ के स्कूल कॉलेज जाता है, उधर बेचारा पहुंच जाके वो खेत में बैठा रहता है बच्चा. इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक ही स्टेट में इतना डिफरेंस. So the first thing that you have to observe under Harappan civilization, their living style. Some were potters, you know potters who make pots. Some were this ironsmith, goldsmith. Some were tradesmen, businessmen. Some were making statues. Which metal was used? Bronze. Copper was the first metal. Then came the alloy. Bronze. हाँ, the dancing idol है उसको भी मत. क्या वो dancing idol का नाम क्या है? वो तो बता. डांसिंग आइडल का नाम क्या है? एक लेडी है ना ऐसा खड़ा है. हाँ. And then in Hindu mythology, when you do that dance called Bharatanatyam, we have a statue. Whose statue it is? Statue whose? Dancing pose of whom? Lord Shiva. And that is called as Nataraja. Have you heard Nataraja? देखा नहीं है? अरे भरतनाट्यम एटलीस्ट टीवी में तो देखा है. व्हाट इज भरतनाट्यम? इसको क्या है भरतनाट्यम? बोल. स्टाइल है डांस. तुझे आता है? नहीं. तो जरा करके दिखा. सर नहीं पूरा कैसे चल. हाँ तो उसीलिए तो पूछ रहा हूँ, करके दिखा. Means before you start the dance you have to do the साष्टांग नमस्कार और गुरु नमस्कार बोलते हैं. और एक बड़ा स्टैचू रहेगा. And it is made out of bronze. Generally bronze या कॉपर का है. And it is the dancing idol of Lord Shiva. एक टांग उठा रहेगा देखो एंड और संकट करेक्ट. और यहाँ पर क्लिक लगेगी. अरे वाह समझ. फिर कान में क्या रहेगा और कैसे क्या सोने का कुछ रहेगा. क्यों? स्टैचू ब्रॉन्ज का है और गले में सोने का रहेगा. Why this? So we always believe this bronze culture started from where? Harappan civilization or Indus Valley. When the world was not knowing what to use the stones, these people are using metals. They started at bronze. Bronze, they started bronze. Also started using steel. Correct. So in fact many people say sir history है ना sir. मैं बोला नहीं, very interesting. अगर आपको अपना पास्ट के बारे में मालूम है तो आप अपना किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं and you can tell don't think India is having a rich civilization. You guys don't know how to live in the house. We were having 2-storied house. पूछा what is the proof? बोले क्या proof? आता हरप्पन है ना. When they were not knowing how to read and write, they were having their own literature. Pictographic, hieroglyphic writings. And they don't know what is science. These people have done scientific inventions. Have you heard of plastic surgery? Yes. Indians, Harappans were having plastic surgery surgeons. Indian Doctors only. They only developed the first plastic surgery. The first plastic surgery was from Engineers. The way they have constructed the temples. There are many all over India, but I will say one. If you have visited a place called Tanjore in Tamil Nadu, Tanjavur bolte hain. The temple is so huge. On the top there is so many big weight of a stone is kept. Until now, many foreign scientists are saying, इतना बड़ा stone ऊपर कैसा लेके गए वो लोग? It is very tall.
कुछ लोग बोलता क्रेन यूज किया रहेगा, उधर तक क्रेन किधर था? हाँ, बट कैसा इतना हेवी स्टोन है एंड द स्टोन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज जस्ट केप्ट ऑन द टोप, और वो टोप उसको वेट आज भी उठाया। वो लैडर से अच्छा बनता है। अच्छा लैडर बना दिया स्टोन को, क्या तू धक्का मारेगा उतना? स्लोप बना No, they might have created one slope where this tone becomes smaller and this becomes bigger, and they might have pushed it, but it is so difficult. तो फिक्स करके They said till date you go to that temple any time of the day, जो main shrine है ना उसका shadow नहीं गिरता है। सर ये कैसा होता है? सबका तो shadow गिरता है, but उसका नहीं गिरता। शैडो होता है कि नहीं? होता है ना, क्यों नहीं? When you are placing an object to a sun, इसके ऊपर जब लाइट नहीं गिरेगा इसका शैडो तो गिरेगा ही। तो बट ये जो ट्यूब है अभी तक उसका शैडो नहीं गिरता। तुम दोपहर 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 2 बजे उतना है कि वहां तक। हाँ उतना है, सन के ऊपर जाके। ये कॉमन सेंस का माँ है। And they say it is till date earthquakes come or not come, it will be unshakable. ना हेवी तो है, बट अर्थ से थोड़ी हेवी है, हेवी सबको हिला देगा ना। They have constructed on एपिसेंटर का ऊपर एक कुछ स्टोन्स डाल के उसके ऊपर ये लोग ने बनाया। So why I'm saying this temple, there are Khajuraho temple, there are Somnath temple, है ना, इंडिया में हर जगह है। But this is art of engineering. कुछ टेम्पल्स का 1000 साल पुराना है, आज भी वैसे ही इरेक्ट खड़ा है, no nothing. नहीं कैसा भी टेम्पल जिसमें एक बार ही चले अंदर जाता है, बाकी सब में। So why don't you speak in English? That's better. Tell me that in English. You will shut us. अरे ये हिंदी समझ। नहीं तेरा समझ में नहीं आया, बोल ना, मैं भी तो हिंदी समझता हूँ, तो क्या है? नहीं वो एक टेम्पल है जिसमें एक दिन ही लाइट अंदर जाता है, बाकी सारे दिन लाइट। एक ही दिन समझा उसका एक कुछ, और एक बार बोल, एक हाँ, ही दिन लाइट बोल रहा है कि ऐसा टेम्पल है जिसमें सिर्फ एक ही दिन वो खुला रहता है, बाकी दिन बंद रहता है। किधर? ऐसा नहीं, एक ही दिन लाइट अंदर जाता है। हाँ। कौन सा? वो यहाँ पे आते हैं, नाम याद है तो नाम के नाम। ऐसा मैं भी बोलूंगा, एक टेम्पल ऐसा है ना जिसका सर ऊपर है और पाँव नीचे है। एक टेम्पल है जिसमें ऊपर चढ़ाते हैं। बट वो टेम्पल का नाम तो बता। गूगल पर सर्च करो। फिर तू क्या कर रहा है? मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी ब्रिंग बैक टू पहला वर्ड, हाँ टाउन प्लान। सेकंड वर्ड क्या है? सरप्लस। What is surplus food? I have written here something called as एक्स्ट्रा। नहीं इधर है ना, granaries. What are granaries? स्टोरेज। A time was there when they were produced for their own family, but this civilization for the entire village. स्टोरेज। If there was any floods or any we can say what is that? Suka to English में suka drought भी नहीं, आप कुछ बोलते हैं। That time these people will get the granaries from here, food. अभी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है, ये लोग ने 4000-5000 साल पहले कर लिए। Then what are great baths? Sir, at one place many people will come and take a bath. Like somewhere it happens in now India, holy bath. You understand holy bath? Yes. Sir, ये क्या sir? These are imaginarily, intelligently super people. Correct? Then what has happened? Might be some natural calamity, everything perished. How did we come to know about Harappan civilization if I ask you? How? By digging. हाँ excavating. But कैसे मालूम पड़ा excavate करने के लिए? तो किधर भी जाके excavate करेगा क्या? We have a department in our country called ASI. Full form? He is looking and smiling. Archaeological Survey of India. Write down in your notebook. Archaeology. Archaeological Survey of India. This is the department which brings about the many historical facts. Archaeological Survey of India. इसका भी मैं हिस्ट्री बता सकता हूँ, सुना है? नहीं, मुझे एक ही दिन में बहुत भारी हो गया। मजा आ रहा है? चलो थैंक यू। तुझे कैसा आ रहा है? क्या? अरे उसको मजा आ रहा है, तुझे क्या आ रहा है? प्रैक्टिकल हिस्ट्री में मजा आ रहा है। थैंक यू। मतलब he is complimenting my method of teaching. मैंने कभी बुरा बोला?
मैंने बुरा नहीं, अच्छा तो बोलना तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तेरे लिए मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समझ एक So we always believe that citadel, town planning, if I tell you town planning, all the buildings and the roads were exactly perpendicular roads, 90-degree angle, and जो building road का कोने में था उसको circle कर देता था. You know what it was circling? So that movement of the traffic should not be hurt. So how these people have done? They had even street lighting also. सर 2 स्टोरी का बिल्डिंग था और सेकंड स्टोरी में भी बाथरूम्स एंड वॉशरूम्स था। हाँ, दिस इज व्हाट ये सब पूरा ASA ने निकाला पूरा इंफॉर्मेशन एंड दे हैव डिकोडेड द लैंग्वेजेस व्हाट दीस गाइस हैव रिटन एंड दे ब्रॉट द सिटीज आल्सो अलाइव। आई डोंट नो वेदर आई हैव दैट 100 rupees note. The new 100 rupees note has a big building. 200 वाला। You check in your house. The first building in the world generally रानी के लिए राजा बनाता है, but the first building in the world रानी का वाव, where the Rani has made a palace or a building in the memory of her husband. कभी सुना है हिस्ट्री में आप लोग ने? नहीं सर, जनरली रानी के लिए राजा बनाता है, राजा के लिए कोई रानी ने पैलेस नहीं बनाया, but we have रानी का वाव। वो बोलता है कि not more than 35 years it was inside the earth and now they have dug out. 35 years. हाँ, 35 नहीं 100 years कुछ है, वो 35 years before लोगों ने डग आउट किया। एंड वो पिक्चर आके हमारा 100 rupees करेंसी नोट है ना, आपका घर में जाएंगे ना उसका पीछे लिखा रहेगा एंड उसको हम लोग रानी का वाव बोलते हैं, बिकॉज रानी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द क्वीन हु हैज कंस्ट्रक्टेड द पैलेस इन द मेमोरी ऑफ हर डेड हस्बैंड। ताजमहल शाहजहां ने उसका वाइफ के लिए बनाया, मुमताज के लिए। ऐसा बहुत सारा पैलेस है जो हस्बैंड लोग ने बनाया, बट फर्स्ट टाइम रानी ने उसके लिए बनाया। So why I'm saying all this? Town planning, granaries, underground drainage. You don't understand underground drainage? Now it is very common, but in those days, and no choke-ups. You understand choke-ups? देखो हमारा मुंबई थोड़ा बारिश के वजह तो पूरा पानी अंदर घुस जाता, but this town planning was good. So this shows which skill, engineering skills. Today you ask any engineer who is going to 4 years of diploma and 5 years of degree, एक बिल्डिंग का लेआउट बनाने बोलो, आज बिल्डिंग बनाते 3 साल में बिल्डिंग बैठ जाती, इतना अच्छा स्टडी किया है इंजीनियर। पर उस जमाने में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज था, है ना, कौन सा डिग्री था, कुछ नहीं था। मेडिसिन, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन हिस्ट्री, everything was very good. Why? So genius people are these. So whenever any foreigners say that our civilization is old as our civilization, no, चुप रहे, सबका civilization का हमारा civilization, वो word मुझे बोलने का नहीं तो बोलती। But this shows the art of excellence, correct? This shows the art of engineering. तो लड़का बोलते इसमें मेरा क्या, तेरा क्या है? It is your own citizens only, your own forefathers. सर मुझे तो आज IPL मैच अभी स्टार्ट हुआ रहेगा, क्या स्कोर चल रहा है, हाँ बस वो बता दो, बहुत हो गया। IPL गया तेल लगाने, स्टडी अबाउट हरप्पन। So what is Harappan is going to teach you? Sir, a high level of engineering skills which you and me have not thought about in which year? 3000, 4000 years before. So the world has not witnessed such a big civilization. Shall we get into the chapter? और और कुछ बोलूं? ठीक, you can use your volume or the textbook. You are not having the volume ना? एक काम कर, तू इधर आ जा, second bench में। You don't like first bench ना? Second bench। In that page they have given what? First page they've given. You go to a heading called Bronze Age Civilization. Did you get it? है? उसके पहले एक पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक में है, the period between 4000 to 3000 BC. Did you see? Yes sir. Underline that, 4000 to 3000 BC. Then you can see. You read from that line, 3000 to 4000 BC.
Let him read. He is forfeited the text. Come on. Read for me. Because I am not having both. You have to read. Why is he little bit amused with it? The period between 4000 and 3000 BC saw remarkable progress. Greater knowledge and skill in mastering forces of nature. He took to agriculture and began to make more efficient tools and started living more or less a settled life on the banks of River? Indus. Underline that word, settle the life. What did you write? You write this word. Food producer. Settle the life के बाजू में pencil से लिखने का. Food producer. Next. So a number of dispersed farming villages evolved first into towns and then into cities. Underline towns and cities. Which is bigger? Towns bigger or cities bigger? Cities are bigger. Towns are a part of cities only. है ना? Many cities makes one big town. Go ahead. Good. So, the river valleys and the agriculture support a dense population and produce surplus food. The surplus food freed some people from the task of producing their own food. These individuals gradually became specialists and developed a substantial range of new skills. Skills such as writing using letter. Put all this into bracket. Seal making and last. Put all this into bracket. And wherever you feel have a doubt, you are most welcome to ask me. क्या so क्या? So knowledge and skills enable people to advance and use to the progress of civilization. Done. Go to the next paragraph from the textbook. The Harappan civilization. Yeah. Now his textbook is an old textbook, I think. Correct, Dad? The Harappan civilization. Yes. Let us start that. Harappan civilization. The Egyptian industrial civilization in the 20th century was an important event in the history of India. Up to this time, it was believed that the history of India began with the advent of Beginning. Advent of Aryans. However, Underline the word advent, you write beginning. So what are we trying to say? मतलब Indian history कहाँ से start होता है? Harappan civilization से start होता है. That's what we believe. उसके बाद आर्यन है ना? अरे बाबा आर्यन से हरप्पन है. Harappa is a place. Sir, आर्यन का मतलब begin. Begin. However, the discovery of Harappan civilization stretched back the origin of Indian history so as to put it at par with the another oldest civilization of the world, namely Meso. Oh my God, he's messy. Don't laugh like this. Mesopotamian. Say it again. Mesopotamia. क्यों इतना शर्मा क्यों रहा है? लड़की बड़ी है, हाँ? Sir. You have a country called Iran and Iraq. Yes, sir. अभी है? What is Iraq famous for? Saddam Hussein का नाम सुना है? Yes, sir. Was again attacked and killed by these American forces only. He was a dictator of Iraq. But he was a good ruler. But America ने उसके ऊपर दुनिया भर का sanctions लगाया. But he was not respecting America. And he was killed. He was given that death sentence on the day of Eid. You know, they celebrate Eid. Gulf War देख लेना. War between America and Saddam Hussein in the year 1991-92. Saddam Hussein तो लोग ने पूरा कंट्री को मार दिया था. And he fled for his life. And finally कोई तो गुफा में वो मिला. And he was having big beard. Nobody can identify him. Saddam Hussein. He was according to me, he was a good ruler. मतलब वो अपना स्टेट के लिए was a good ruler,
बट जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया ही पनिश्ड, डिक्टेटर सब वैसे ही है ना। बट अमेरिका को वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने उसके ऊपर बोला कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये बना रहा है, कुछ मिला तो कुछ नहीं, बट दे अटैक एंड सद्दाम So हुसैन after the war, he was found. गिवन द डेथ सेंटेंस। जब मिला उसको पकड़ा, लोग ने वो मुझे आज भी याद है दिन आई वाज इन माय स्कूल लाइफ ओनली, सद्दाम हुसैन मिल गया करके बीबीसी टेलीविजन दिखा रहा था, एंड ही वाज विद बियर्ड एंड दे वर सर्चिंग हिज टीथ एंड माउथ फर्स्ट because they have this cyanide pills. You know what are cyanide pills? Generally they keep it in their teeth, some either colimera. When you bite it, within few minutes you will die. So they were checking if bhai sahab ne rakha hai. But I felt America ने wrong किया. He should be given a decent death. कुछ लोगों ने बोला उसका हाथ बांध के पुश किया उसको, उसने बोला मुझे सिगार पीने का, you know, he was a great ruler of this country, like a king he ruled. एंड उसने बोला कि मरने से पहले मुझे कुरान पढ़ने का, कुरान, यू नो व्हाट इज कुरान ना, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, डाल दिया बस। अभी अमेरिका है, बट अभी अमेरिका का मैं अभी 10th में वो एक्सप्लेन कर रहा था, स्लोली स्लोली अमेरिका अपना क्या बोलते ना शाइन लूज कर रहा है, ऑल थैंक्स टू दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर। देख रहा है वो तो देख रहा है, रशिया इज अटैकिंग अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड यूक्रेन एंड यूक्रेन इज वेल सपोर्टेड बाय अमेरिका। अमेरिका अपना सिटीजन्स को तो मारने के लिए नहीं छोड़ा, बट यूक्रेन का सिटीजन्स, पुअर पीपल, दे आर डाइंग, जैसे स्कूल चिल्ड्रन लाइक योर एज 1000, बट मुझे लगता है 3000 4000 बच्चे लोग मारा गए। हाउ पैथेटिक इट इज, एंड एवरीडे पीपल आर डाइंग। अमेरिका क्या कर रहा है, वेपन्स दे, ये लो रखो, अरे वेपन्स को रख के थोड़ी वो जीतेगा। अमेरिका का तो एक भी सिटीजन नहीं मारा। एंड अफगानिस्तान का देखा तुम लोगों ने 2 years before, not 2 years, 1 year before only, COVID के time, America has left Afghanistan on its own, and you see the terrorists of that Afghanistan, how brutally they are killing the people. Aeroplane से बेचारे, हाँ aeroplane से बेचारा गिरा भी था, कितना लोग लटक के उड़ने का ट्राई कर रहे, they were so terrorized for Taliban. If I tell you, you spit on America, America 20 years था अफगानिस्तान का, 20 साल था, क्या किया तुम लोग ने 20 साल? अल्टीमेटली जाके बुचर्स के हाथ में दे दिया ना कंट्री में, यू अंडरस्टैंड, बुचर्स ना, जो सबको पब्लिक को मारता है, पागल है। अमेरिका अपना नाम खुद खराब करके लो। अभी वो चाहता है कि इंडिया मस्ट गो एंड स्टॉप पुटिन, बट इंडिया एंड रशिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर आप तो इंडिया आपको नहीं मालूम रहेगा, when Pakistan attacked India in the year 1971. Everybody supported Pakistan, but only Russia supported. Not everybody. I can tell you the list of countries. 13 countries supported Pakistan. उसमें अमेरिका भी था, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, and almost these 13 countries sent their troops to attack India, not Pakistan. तो वहां से 2 वॉरशिप आया, दोनों वॉरशिप जब इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, इस तरह तो ये सब अपना अपना दुम दबा के भाग गए। लोग ने बोला नहीं, हम तो ऐसे घूमने आए हैं, फ्लाइट लेके और भाग गए सब। रशिया इसके लिए, रशिया वाज सच अ पावरफुल कंट्री, रशिया इज नॉट ऑर्डिनरी। तो इंडिया उस दिन से लेके आज तक रशिया का सपोर्ट में ही रहता है, एंड इंडिया इज करेक्ट। हाँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करता, हाँ क्यों करेंगे ना। एंड यूक्रेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन अगेंस्ट इंडिया विद पाकिस्तान। अभी यूक्रेन बहुत रो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमसे बात करो, ये करो, वो करो। अरे तू था किधर? पाकिस्तान के पूरा वेपन्स आके यूक्रेन ही सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का जितना भी टेररिस्ट वेपन्स है पूरा यूक्रेन बेचता है उसको। अभी तेरा ऊपर आया तो बहुत रो रहा है ना? But Modi is doing a right work. He is talking to the Putin also. He is talking to the Ukrainian president also. आप लोग न्यूज़ देखने का आदत नहीं है, but yesterday there was a summit between India and US. मालूम है? Virtual summit था. Indian Prime Minister and an American President were talking. And American President Joe Biden. Have you seen him? वो अपना इंग्लिश फर्राटा इंग्लिश में बात कर रहा था. मोदी अपना फर्राटा हिंदी में बात कर रहा था. And he rightly told, I am neither supporting Russia, neither I am supporting Ukraine. I want peace. And he is correct. He is speaking on the phone to both the people. Yes. He's not supporting Russia, but he is not voting against Russia in UN. Because अमेरिका चाहता है कि इंडिया अगर आगे बढ़ के बोलेगा ना रशिया को रोक सकता है, बट इंडिया नहीं करेगा। क्यों करेगा? He is telling that we are on the side of Russia because if he plans to throw a nuclear bomb, they are destroyed. Correct.
Otherwise, we will stop Russia. Russia and India have a very good friendship, not today or yesterday, for so many years. Chandragupta Maurya, Ashoka the Great, उनका जो seal है ना, coins, रशिया में मिला है. तो उस जमाने से इंडिया और रशिया ट्रेड करता है. And अमेरिका बहुत क्या बोलता है ना, एक साइड से वेपन्स बेच रहा है, दूसरे साइड से बोला मारो मारो मारो. ये जो बाइडेन का 2 बेटा था, उसका एक बेटा का कुछ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट में डेथ हो गया और दूसरा बेटा अभी वेपन्स बेचता है. एंड वही ये वॉर का बिजनेस कर रहा है. जब तक यूक्रेन मरेगा तब तक बिजनेस अमेरिका का चलता रहेगा. तो पानी यूक्रेन का पूरा डेड हो जाएगा, वो पूरा अभी वैसे भी बचा किधर है. रशिया ने ऑलमोस्ट सब सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया. कीव, देन वी हैव द मारियोपोल, देन डोनबास. अब इतनी छोटी कंट्री में कौन सा छोटा कंट्री नहीं, थोड़ा बड़ा है. आज कंपेयर टू पाकिस्तान से तो काफी बड़ा ही है यूक्रेन. एंड ये जिद किसका है? ज़ेलेंस्की, उनका प्रेसिडेंट. उसको जब बोला गया कि नाटो का मेंबरशिप मत ले, उसने बोला मैं नहीं लूंगा. तो कौन सा नाटो तेरे लिए सामने खड़ा है? नोबडी इज देयर. यूक्रेन अलोन फाइटिंग विद रशिया. ये लोग सब सिर्फ वेपन्स और आर्म्स दे रहे हैं. अरे तुम्हारा आर्मी भेजो ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा आर्मी है. दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ whom? मिस्टर पुतिन. अगर किसी ने भी, उसने बोला किसी ने भी अपना आर्मी दिया, नेक्स्ट दिन उसका कंट्री पे मैं अटैक करेगा. तो ये अमेरिका, लंदन, फ्रांस सब डरा हुआ है. जर्मनी तो पहले हाथ जोड़ दिया, हमसे कुछ नहीं पूछा. नहीं, we don't want that war because anyway it is going to destroy the whole world. We don't want. But यूक्रेन अपने जिद से अगर एक बार नीचे आता है, तो at least this war will come to an end. बट यूक्रेन को लगता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा ग्रेट है. काय का ग्रेट है? तो पूरा सिटी का उसने बैंड बजा दिया. You are not dying. Who is dying? Common citizens. And Ukraine ने I think एक हफ्ते पहले रशिया में अटैक कर दिया. That is the biggest mistake Ukraine has done. They have put bombs on one of the oil depots in Russia. Do you think Putin is going to leave them? Within 2 hours, he has fired not more than 56 missiles with powerful missiles. Mr. Putin बोला तो सब मेन से ही. But I feel poor people of Ukraine are the sufferers, है ना? And जब ये war खत्म होगा, यूक्रेन क्या रहेगा? कुछ भी नहीं. अभी बचा नहीं है, सब गया. यूक्रेन को पूरे मार के वो पूरा रशिया के अंदर आ जाएगा. नहीं, रशिया नहीं लेगा. रशिया सिर्फ एक नेम सेक के लिए रूलर को बिठाएगा जो रशिया का बात सुनता है, और कुछ नहीं. वो नहीं सुनेगा तो वो भी तो बोल देगा. नहीं, वो तो कंडीशन में रहेगा. अभी मैं तुमको किंग बना रहा है और तुम मेरा बात नहीं सुनेगा तो मैं तुमको छोड़ेगा. रशिया इज वेरी स्मार्ट इन दैट. चलिए, लेट्स गेट इन. हां, कम ऑन. आर यू रेडी? Yes. हां. Therefore, this civilization is the best name as the European culture or European civilization. In terms of culture is used पढ़ा नहीं पढ़ा. बड़ा वो बड़ा. और में डिस्कवरी पढ़ लिया. ना पढ़ लिया. Archaeologists for a group of objects distinctive in style that are usually found to Underline the word distinctive and write this word. Unique in style. Write this word. Unique. You understand the word unique at least? Yes, sir. Unique in style. Sir. Yes. Sir, what time is English, no Hindi. Sir, when the European civilization started, how they planning to do that? They also come from migration or how Okay, they you are asking me how did they got good Yes. brains to do all this? Listen, when they came from Mongolia, Central Asia to India, they were animal raiders. They have written there, food gatherers. When they settled here, first thing they started was farming. Because of it. Indus Valley. Once they started farming, they had huge food grains. So they went. They done the, what is that, granary. They started constructing granary. When they constructed granary, they want to distribute the granary in a very democratic way. 2 row of 6 created. Then they wanted a building called citadel. When they built a citadel, the government said we have money to construct temples now. Cities. For whom? For the citizens. When they done cities, they want the roads. The cities, 2 हाँ. 2 floor
That is what. When they want roads, they want the underground drainage. So in history, we call need is the mother of all invention. You understand need? जब आपको कुछ जरूरत रहता है, आप अपने आप एक नया चीज बना लेते. So this is how with their experience, with their understanding. I don't know, you might be using a latest mobile phone, is it even like I am using? Every time we check the memory of the mobile phone. And let me tell you, the chip that is fitted by the God, our memory is huge. Even supercomputer cannot challenge the human brain. Can it? अभी हम लोग हर जगह टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, हर चीज. रुको सर, गूगल में चेक करते हैं, क्यों तेरा दिमाग नहीं है क्या? So those people did not have the technology, they used their brains. Correct? Slowly and steadily. But जो टेक्नोलॉजी से उन्होंने बनाया, आज हम लोग को घर बना सकता है? नहीं बना सकता. वो बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं. They use the burn bricks. burn bricks first time. देखो, is correct. पहले burn bricks यूज नहीं होता था, but इधर burn bricks भी यूज हो रहा है. Now it is used. But उस टाइम पर कौन यूज करता था? No other civilization except this. Okay, चलो, we have put 5 minutes to go, 3 minutes to go. Come on. How many lines are there left? 1, 2. Let us finish this. And when we are meeting next time, what is this? Sources. Sources means where did we get all this? Okay. Correct. In case of Harappan culture, this distinctive. What is he murdering the English thing? Good. Carry on. Objects are seals, weights, stones, weights. What is it? Weights. Stone weights. Weights for using, like we have 1 किलो का हुआ है ना, उस जमाने में स्टोन से बना था. Double. Oh my God. Body building थोड़ी उधर कर रहा है. To buy and sell the commodities. And basket bricks. Baked. तू नहीं बोला ना, burnt bricks, उसी को baked बोला है, और कुछ नहीं. Next. It is also called Harappan civilization because the Harappan site was the first to be discovered in 1921. Underline that, 1921. Your textbook is a new textbook. This is the old one. It is called after the name of first place at civilization. It's okay. Carry on, read. इसका कुछ अलग ही है दिख रहा है. Carry on. At the modern site of the Harappan, situated in the Is it sampling with that? provinces of West Punjab. Provinces of West Punjab. This boys are getting pretty wonder. In the Pakistan, Mohenjo-daro was discovered in 1922. After a year. Both the site lie in the Indus Valley region. Indus Valley region. Is it the Paragraph? Yes, sir. Okay. So now what we have learned today? Harappan civilization. What regarding Harappan civilization? Yes. They were animal rearers, farmers. Wonder. Oh, good. Art of living, agriculture. Good. Dekho. What did you learn? Only he has learned everything. Engineering. Can you tell me any one building which shows the art of engineering? In Kerala, sir. केरला में कहाँ से आया? Citadel. केरला में कहाँ से हरप्पन civilization आया? नहीं, आपने वो एग्जांपल दिया मंदिर. अरे वो नहीं. वो हरप्पन वाला नहीं था. That is in Tamil Nadu. That's okay. You can relax. You can. Next lecture starts with क्या हो गया? You want me to stop it? 5 मिनट. लेक्चर खत्म. Hey, in your school, what